दुनियार प्रथम हेड ट्रांसप्लांट सिस्टम देखंतु वीडियो उभय एक भयावहता एवं विवाद सृष्टि करिथिबा एक भूमिपूजन प्रकाशरे अमेरिका रे अवस्थित न्यूरो साइंस एवं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप ब्रेन ब्रिज विश्वर प्रथम हेड ट्रांसप्लांट सिस्टम विकास पई एहार अहेतुक मिशन को उन्मोचन करिछि। चमत्कार घोषणा एक मेरुदंड चिली वीडियो सहित अनुकरण करा जायतिबा प्रक्रिया को चित्रण करिथाय, जेउठारे दुईटी स्वयंशासित सर्जिकल रोबोट मानव मुंड को गोटे रोबोटिक शरीर अन्य को स्थानांतर करिथाय। साइ-फाई थ्रिल दृश्य को मने पकाउथिबा बेले ब्रेन ब्रिज दृष्टोक्ति प्रकाश करिछि जे एहार प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान रे दृष्टि होइछि, जहा स्टेज माइंस 4 कर्कट, पक्षाघात एवं दुर्बल न्यूरोडेजेनरेटिव रोग भली असुरक्षित अवस्था रे पीड़ित रोगी को आशार किरण प्रदान करबाकू लक्ष्य रखिछि। अल्जाइमर एवं पार्किंसन परि ब्रेन ब्रिज रो वैपरीक प्रणाली रो मूल रे चेतना, स्मृति एवं ज्ञान क्षमता बंचाइबार उच्चाभिलाषी लक्ष्य सहित रोगीर मुंड को एक सुस्थ मस्तिष्क मृत दाता शरीर उपरे स्थानांतर करिबार संकल्प रहिछि। एही उच्चाभिलाषी दृष्टिकोण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुड़िकरे प्रतिक्रियार एक भयंकर कटकसज्ञ सृष्टि करिछि, जेउथिरे उपभोक्ता माने भयभीत हेबाठारु भयभीत हेबा पर्यंत एक भाव प्रवणता प्रकाश करिसंती। समालोचक माने नैतिक चिंताधारा बढ़ाइछंती, जहा कि एक उच्च शक्तिर डोमेन भाबरे जहा किछि बुझिबारे लागिछि। सेथिरे ट्याम्परी करिबाकू चेष्टा करुथिबा हबिस विरुद्ध रे चेतावनी देइछंती। अनैतिक भाबरे एहा व्यवहार करा जाउथिबा कल्पना करि पारु नाही। जणे व्यवहारकारी कहिछंती, जेउ माने एही अग्रगति को संदेह रे देखंती सेमानंक भावना को आबद्ध करिंती। अन्य कहिछंती सृष्टिकर्ता भगवानंक सह प्रतिद्वंदिता करि परिबो नाही। अधिकंतु एही परि भीतिहीन चिकित्सा हस्तक्षेपर उपलब्धता एवं समानता उपरे प्रश्न उठिछि। आशंका सहित एही प्रक्रिया केवल धनी अभिजितंक निकटरे उपलब्ध होई पारे। अत्याधुनिक चिकित्सा प्रजुक्ति विद्यारे संभाव्य पार्थक्य को नहीं जणे उपभोक्ता कहिछंती जे एहा बोध हुए केवल धनी मानंक पई उपलब्ध हेबो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे तीव्र वितर्क चालिथिले मध्य मेडिकल विज्ञानर सीमा को थेलिबा पई ब्रेन ब्रिज निराश होई रहिछि। ब्रेन ब्रिज रो प्रोजेक्ट लीड हासेम अल घाइलिंक नेतृत्व रे कंपनी एहार उच्चाभिलाषी दूरदृष्टि हासिल पई एक जटिल रोड मैप वर्णना करिछि। मस्तिष्क गतिर अवक्षय को ह्रास करिबा एवं ट्रांसप्लांट होइथिबा मुंड एवं दाता शरीर मध्य निरंतर सुसंगतता सुनिश्चित करबा पई हाई स्पीड रोबोटिक सिस्टम गुड़िक कल्पना करा जायछि। उन्नत इओ एल्गोरिदम गुड़िक मेरुदंड, स्नायु एवं रक्त भंडारर सूक्ष्म पुनर्दह सजोगरे सर्जिकल रोबोट को मार्गदर्शन करबाकू योजना करा जायछि। पद्धतिर सफलता पई अविच्छेद्य हेउछि ब्रेन ब्रिज रो मालिकाना रासायनिक आडेसिव एवं पॉलीथिन ग्लाइकल, जहा विच्छिन्न न्यूरॉन गुड़िकर पुनः सजोग को सुगम करबा पई परिकल्पित। अल घाइली जोर दैछंती जे ब्रेन ब्रिज धारणार प्रत्येक दिग व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा अंतर्भुक्त होइछि। डाक्तरी विज्ञान को आगको बढ़ाइबा एवं जीवन प्रति विपद सृष्टि करुथिबा व्यक्तिंक पई अभिनव समाधान प्रदान करिबा पई निरंतर प्रतिबद्धता रहिछि। अल गहली कहिछंती जे जदि संभाव्य अध्ययनर फलाफल सकारात्मक अटे तेबे 8 वर्ष मध्यरे प्रथम अस्त्रोपचार करा जायछि। ब्रेन ब्रिज रो उच्चाभिलाषी प्रयास अविभक्त अंचल रे एक बोल्ड लंघ को चिन्हित करे, जहा चैलेंजर सम्मुखीन होई मानव चतुरतार अदम्य आत्मा को सूचित करे। दुनिया निश्वास प्रश्वास रे देखुथिबा बेले डाक्तरी विज्ञानर गतिपथ अदृश्य सफलतार अग्रभागरे छिड़ा होइछि, जहा प्रतिकूल परिस्थिति रे थिबा लोकंकु आशार आलोक प्रदान करूछि। Oxygenated blood. With the help of its ultra-precision surgical instruments, BrainBridge begins reconnecting the spinal cord, esophagus, trachea, nerves, blood vessels, and other tissues. This step facilitates communication between the brain and the new body. The machine utilizes microsurgery techniques and delicate microscopic adjustments to ensure the proper alignment and fusion of the spinal cord and other tissues. To help reconnect the severed neurons, BrainBridge uses a proprietary chemical adhesive, polyethylene glycol, which is applied locally to the spine at the point of fusion. Once the spinal cord is connected, a specialized implant is placed in the epidural space behind the spine over the point of fusion. This implant promotes the repair of damaged neurons and allows the patient's brain to form neural connections with the new body and ensures that the sensory system is restored. It also functions as a temporary backup control device for the donor body. The next step of the operation is a face and scalp transplant where all the muscles, soft tissues, and skin are removed from the recipient's face. The donor's face, muscles, and soft tissues are then precisely transplanted in their place.
By transplanting younger donor tissues, the procedure reduces the probability of tissue rejection and offers potential for aesthetic enhancement, particularly in cases where the donor is significantly younger than the recipient. It also restores functionality and structural integrity to the recipient's face and rejuvenates its appearance. BrainBridge then carefully sutures the skin to conceal the complex rewiring beneath the surface. The skin is then treated with a special spray that contains growth factors, antifibrotics, and antibiotics. This spray promotes faster skin healing, prevents infections, and reduces scarring in the sutured area. Finally, immunosuppressive drugs are administered to prevent the recipient's immune system from rejecting the donor body. After the surgery, the recipient is carefully monitored in an intensive care unit and is kept in a coma for up to 4 weeks to prevent movement or misalignment of the connected body parts. During this time, the head, neck, and spine are firmly stabilized to optimize the fusion of the spinal cord. Life support systems are utilized to regulate breathing and circulation, while nutrition is delivered through a jejunostomy feeding tube. Gradually, the recipient's brain should regain control over the new body. As the recovery process advances and the patient regains mobility, there will be a need for extensive rehabilitation, physical therapy, and psychological support to help the recipient adapt to their new body and regain motor functions. BrainBridge Headband, which is equipped with a brain-computer interface, will allow the patient to communicate their needs during recovery. Thanks to the power of thought, the headband decodes brainwaves and turns them into text or speech. It could allow the patient to control other devices directly from their brain, granting them the autonomy to execute specific tasks independently throughout their recovery journey. Because of the complexity and unexpected challenges of the head transplant procedure, self-learning algorithms allow BrainBridge to avoid errors and adapt surgical plans in real time depending on the surgery's needs. It can also improve its capabilities over time by learning from previous surgeries. Learning algorithms can recall past procedures and outcomes to continually refine and enhance surgical techniques and post-operative care. While the surgery is being conducted, the BrainBridge algorithm creates a personalized recovery plan depending on the progress of the procedure and the needs of the patient. To maximize compatibility and ensure seamless integration, we collaborate with the top experts in generative artificial intelligence, brain-to-computer interfaces, and robotics, with multiple successful projects and hundreds of high-profile peer-reviewed research papers. Over the past few years, we developed the end-to-end approach which accounts for every single detail, including immune compatibility, brain-body connectivity, replacement of the visual and olfactory systems, and post-operative rehabilitation. दर्शक बंधु एमिति लेटेस्ट न्यूज जानिबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक एवं शेयर करिवे। नमस्कार।